वेलकम बैक टू असीम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एमसीक्यूज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट की, और ये है बायोलॉजी इन इट्स मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ है स्टडी इम्पैक्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट ऑन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू अर्थ एज कंपोनेंट ऑफ। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, इकोलॉजी. The second one is the number of naturally occurring chemical elements involved in biochemical reactions is 126, 86, 92, 206. 92 is correct option. The third one is which is not a category of classification in biology. First one is ecology, species, genus, order. The first one is ecology. The fourth one is how many of the bioelements constitute 99% of the total human body. 30, 8, 5, 6. D is correct option, 6. The fifth one is the part of earth inhabited by living organism and non-living component is called ecosystem, biosphere, habitat, niche. So B is correct option, biosphere. Which of the following is the structure and function unit of life? Nucleus, cytoplasm, cell or protoplasm. The correct option is C, cell. Cell is the structure and function unit of life. The seventh number is organism which are very similar and have tendency of interbreeding are called species, gene pool, community, niche. तो species क्या होता है? ये similar होता है एक दूसरे, और ये freely interbreed होता है. तो the correct option is A, species. The eighth one is which is not a macromolecules? Starch, ग्लाइकोजन, प्रोटीन और कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये तीन मैक्रो है और ये मतलब ये मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2. द नाइन्थ वन इज विच इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव क्या होता है? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं. आइडेंटिफाई द डिजीज विच टिल नाउ डू नॉट हैव वैक्सीन. इसमें कौन से ऐसे डिजीज होते हैं इसके वैक्सीन अभी तक मतलब नहीं है? पोलियो, वोपिंग कप, मीजल्स, एड्स. एड्स क्या होता है? द करेक्ट ऑप्शन इज डी. 11 नंबर इज इन विच ट्रीटमेंट कैंसरस पार्ट इज एक्सपोज टू short wavelength radiation from the reactive material repeatedly at regular interval. Chemotherapy, radiotherapy or gene therapy and nutritional treatment. The correct option is B, radiotherapy. The next one is in case of cloning the nucleus is taken from oocyte, ovum, fertilized egg या Graafian follicles. The correct option is fertilized egg. 13 number removal or degradation of environmental pollutant or toxic material by living organism is called bioelement, bioremediations, deteriorations or deteriorations, and none of these. The correct option is bioremediation. The 14 number one is a structure within a cell that perform a specific function is called protein, organ system, organelle or system. The correct option is organelle, C. Member of one species inhabiting the same area is called community, population, habitat, species. The correct option is B, population, same species in the same area. A group of similar cells that perform a specific function is called tissue, organ, organelle, system. The correct option is A, tissue. The next one is a branch of biology that deal with the use of living organism, system or processes in manufacturing and services industry is called molecular biology, biotechnology, parasitology, freshwater biology. The correct option is biotechnology. The next one is gymnosperm evolved from Cenozoic era, Mesozoic era, Paleozoic era and Proterozoic era. The correct option is B, Mesozoic era. Fungi and algae evolved from Mesozoic, Cenozoic, Proterozoic era or none of these. The correct option is Proterozoic era. The last one is apid attack walnut tree is being controlled by biological method by. apid क्या होता है? ये स्मॉल इंसेक्ट होता है. जब ये अटैक करता है walnut tree पर तो ये किस तरह हम बायोलॉजिकली कंट्रोल करते हैं? तो थ्रू वास्प, स्पैरो, एंड्स और नन ऑफ दीज. द करेक्ट ऑप्शन इज ए, वास्प. तो ये थी कुछ बेसिक MCQs. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे 20 MCQs जो भी है. तो उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.